Assalamu alaikum dear students, welcome to the course of Psychological Testing and Measurement. I'm here your coach instructor Nazir Yaqub. Our today's topic is convergent and discriminant validity, as well as we will study statistics to measure validity. This lecture has two parts. First is about types of validity, that is convergent and discriminant. All other types are discussed in the separate lectures previously. The second part is about statistical measure or methods used to measure validity. The main topics that we will learn in today's lecture include definition of validity, discriminant validity, convergent validity, statistics used to measure validity, and a demo on SPSS. Validity is the test measuring what it is supposed to measure. As we have read this definition before also, the test that you might use to measure validity depends on the type of validity. What kind of statistical measure you are using will also depend on the type of validity that you are using to measure. Discriminant validity is discussed here in the first part. Discriminant validity refers to the degree to which a measure does not measure or discriminates from other constructs that it is not supposed to measure. मेन हमारा जो टास्क है वो ये हमने ये देखना है कि हम उसी चीज को मेजर कर रहे हैं जो हम मेजर करना चाह रहे थे। डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी में हम डिस्क्रिमिनेट करेंगे कि ये वो चीज है जिसे हम नहीं मेजर करना चाह रहे थे उससे जिससे हम मेजर करना चाह रहे थे, यानी कि हमें वाज़ेह तौर पर ये चीज नजर आती है कि वी आर मेजरिंग दिस एंड दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ दैट मेजरमेंट। Discriminant validity is established by demonstrating that indicators of one construct are dissimilar from other construct. यानी कि एक हमारे पास अगर कोई ऐसा स्केल मौजूद है जिसके अंदर हमारे पास सब फैक्टर्स मौजूद हैं, सब स्केल्स मौजूद हैं, और ऐसा होता है कि हमारे पास एक से ज़्यादा स्केल्स होते हैं, सब स्केल्स होते हैं किसी भी एक स्केल के अंदर, जैसे डैश है उसके अंदर डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस स्केल है, इसी तरह से क्वालिटी ऑफ लाइफ स्केल है, उसके अंदर भी सब स्केल्स मौजूद हैं। जब हम कोई स्केल डेवलप कर रहे होते हैं उसके अंदर जो सब स्केल्स होते हैं या सब फैक्टर्स होते हैं वो सब अलग-अलग फैक्टर को मेजर कर रहे होते हैं। अब डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी और जो हमारे पास कन्वर्जेंट वैलिडिटी है ये सब स्केल्स के बारे में डिस्कशन है कि हमारा जो स्केल है उसके अंदर जो फैक्टर्स हम मेजर कर रहे हैं उन फैक्टर से रिलेटेड जो आइटम्स हैं उनका आपस में लिंक मौजूद हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक जो डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी की सेकंड हमारे पास पोर्शन मौजूद है इस स्लाइड के ऊपर, वहां पे लिखा हुआ है दैट इज हैव लो कोरिलेशन विद अदर कंस्ट्रक्ट। हमारे पास एक कंस्ट्रक्ट है उसकी जो आइटम्स हैं वो 3 हैं, फॉर सपोज 3 to 4 आइटम्स हैं। वो 4 आइटम्स जब हम कोरिलेशन मेजर करते हैं उन 4 आइटम्स का दूसरी आइटम्स के साथ तो उनका कोरिलेशन बहुत कम आता है। ऐसी आइटम्स हमने बार बार जिक्र किया कि जिनका कोरिलेशन जो है वो इक्वलेंट होगा या ज़्यादा होगा, ज़्यादा कोरिलेशन पाया जाएगा उन आइटम्स के दरमियान में, तो वो एक जैसी होंगी। इट मीन्स कि वो कॉन्करेंट वैलिडिटी के अंदर भी हमने इस चीज़ को डिस्कस किया कि एक स्केल का कोरिलेशन जो है दूसरे स्केल के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू जितनी कोरिलेशन की आएगी उतना ज़्यादा हम कहते हैं कि उस जैसा है, वैसे ही कॉन्स्ट्रक्ट को मेजर कर रहा है। लेकिन जब एक सब स्केल जो है उसके कोरिलेशन की वैल्यू हमारे पास कम आती है और दूसरा जो स्केल है सब स्केल जो है उसके आइटम्स की कोरिलेशन की वैल्यू ज़्यादा आती है, तो इसका मतलब ये है कि both subscales are different in nature. Although they are the part of the same scale, but they have their own discriminant validity. Now, convergent validity. Convergent validity refers to the closeness with which a measure relates to or converge on the construct that it is supposed or purported to measure. आप जिस कंस्ट्रक्ट को मेजर कर रहे हैं उसके अंदर कोरिलेशन वैल्यू उन आइटम्स की जब ज़्यादा आएगी तो हम कहते हैं ये कन्वर्जेंट वैलिडिटी रखती हैं। एक सब स्केल की आइटम्स का आपस में कोरिलेशन का लेवल जब ज़्यादा आता है तो हम कहते हैं ये कन्वर्जेंट वैलिडिटी इस स्केल में मौजूद है।
Usually, convergent validity and discriminant validity are assessed jointly for a set of related constructs. आमतौर पर इन दोनों को इकट्ठे ही इस्तेमाल किया जाता है, जॉइंटली यूज किया जाता है, क्योंकि हमारे पास जो स्केल होता है उसमें रिलेटेड कॉन्स्ट्रक्ट्स होते हैं, बट दे हैव डिफरेंट एंटिटीज, उनकी वो अलग अलग मेजर किए जाते हैं, उनको अलग अलग देखा जाता है. For instance, if you expect that an organization's knowledge is related to its performance, how can you assure that your measure of organizational knowledge is indeed measuring organizational knowledge for convergent validity and not organizational performance for discriminant validity? फर्ज करें आप एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है ऑर्गेनाइजेशन नॉलेज को और ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस को मेजर कर रहे हैं. अब इस चीज़ की क्या गारंटी है कि आपका जो स्केल है वो सिर्फ ऑर्गेनाइजेशनल नॉलेज को ही मेजर कर रहा है और ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस को मेजर नहीं कर रहा. अगर तो वो ऑर्गेनाइजेशनल नॉलेज को ही मेजर कर रहा हो तो उसके अंदर कन्वर्जेंट वैलिडिटी मौजूद है. लेकिन अगर आप उसको ये सेपरेटली देखना चाहते हैं कि वो हमारी ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस को नहीं मेजर कर रहा, तो यहाँ पे आपके पास डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी आ जाएगी अगर वो सिर्फ नॉलेज को मेजर कर रहा होगा. परफॉर्मेंस ऑर्गेनाइजेशनल नॉलेज को मेजर कर रहा होगा और परफॉर्मेंस को नहीं मेजर कर रहा होगा, तो आपके पास ये डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी होगी. Convergent validity can be established by comparing the observed values of one indicator of one construct with that of other indicators of the same construct and demonstrating similarly or high correlation between values of these indicators. इसको हम इस तरह भी समझ सकते हैं कि एक सब स्केल के अंदर फर्ज करें हमारे पास 4 आइटम्स हैं. एक इंडिविजुअल आइटम का आइटम नंबर 2, 3, 4 के साथ हमने कोरिलेशन देखना है. हम उस एक आइटम को बाकी आइटम के साथ कंपेयर करके इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे इस सब स्केल के अंदर कन्वर्जेंट वैलिडिटी मौजूद है या नहीं. और जितना ज़्यादा हाई कोरिलेशन आएगा उन इंडिविजुअल आइटम्स के अंदर उतना ही ज़्यादा वो कन्वर्जेंट वैलिडिटी रखती होंगी. वन आइटम इज लिंक्ड विद अनदर आइटम ऑफ द सेम सब फैक्टर. हम अगर इसको कंक्लूड करना चाहें तो एक इंडिविजुअल आइटम जो है वो अपने ही सब फैक्टर की बाकी आइटम्स के साथ कोरिलेट करनी चाहिए, फिर उस स्केल के अंदर कन्वर्जेंट वैलिडिटी हाई होगी. In the above example, if we have a 3-item measure of organizational knowledge and 3 more items for organizational performance. हमारे पास 3 आइटम है ऑर्गेनाइजेशनल नॉलेज की और 3 आइटम है ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस की. बेस्ड ऑन ऑब्जर्व्ड सैंपल डाटा, हमने एक सैंपल से डाटा कलेक्ट कर लिया. वी कैन कंप्यूट बाइवेरिएट कोरिलेशंस बिटवीन ईच पेयर ऑफ नॉलेज एंड परफॉर्मेंस आइटम्स. हम उन दोनों के दरमियान बाइवेरिएट कोरिलेशन को मेजर कर सकते हैं. If this correlation matrix shows high correlations within items of the organizational knowledge and organizational performance constructs, but low correlation between items of these constructs, then we have simultaneously demonstrated convergent and discriminant validity. अगर उनका आपस में आइटम्स का सेम कंस्ट्रक्ट के अंदर कोरिलेशन ज़्यादा है और दूसरी सब स्केल के आइटम्स के साथ कोरिलेशन कम है, तो एक ही वक्त में आपको डिस्क्रिमिनेंट और कन्वर्जेंट वैलिडिटी के क्लैरिफिकेशन सेम टाइम पे मिल जाएगी. इसको मजीद क्लियर करने के लिए देखते हैं टेबल. बाइवेरिएट कोरिलेशन एनालिसिस फॉर कन्वर्जेंट एंड डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी इज हियर. यहाँ पे देखें जो हमारे पास वाइट कलर्स में के बैकग्राउंड के अंदर आइटम्स हैं, दे आर मेजरिंग सेम कंस्ट्रक्ट, एंड जो हमारे पास स्किन कलर में है, पीच कलर में आइटम्स हैं, दे आर मेजरिंग द सेम फैक्टर. अब उन सब आइटम्स का जो है आप देखें कि आपस में रिलेशनशिप कैसा है. जो हमारे पास फर्स्ट 3 रॉस के अंदर वैल्यूज आ रही हैं उन वैल्यूज को आप देखें. KL1 और KL2 KL3 एक फैक्टर है, नॉलेज से रेलिवेंट है, हमने ऑर्गेनाइजेशनल नॉलेज को यहाँ मेजर किया. और PF जो है ये हमारे पास परफॉर्मेंस को मेजर कर रहा है. अब यहाँ पे देखें जो हमारे पास KL1 है और उससे KL2 के साथ सिग्निफिकेंट हाई कोरिलेशन मौजूद है, KL3 के साथ भी हाई कोरिलेशन है, KL2 का KL3 के साथ भी हाई कोरिलेशन मौजूद है. तो ये इंडिकेट कर रहा है हाई कोरिलेशन बिटवीन आइटम्स ऑफ द सेम कंस्ट्रक्ट. ये KL के हवाले से हो गया. अब PF1 का
PF2 के साथ हाई कोरिलेशन है, PF3 के साथ हाई कोरिलेशन है 0.91 के साथ, और PF3 का PF2 के साथ 0.77 के वैल्यू के साथ हाई कोरिलेशन है। तो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि इन कोरिलेशन सब फैक्टर्स का आपस में बहुत ज़्यादा हाई कोरिलेशन मौजूद है। तो ये कन्वर्जेंट वैलिडिटी ऑफ द स्टडी को इंडिकेट कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो हमारे पास वाइट ब्लॉक्स बैकग्राउंड के अंदर वैल्यूज हैं, जिसके अंदर हमारे पास जो नॉलेज, ऑर्गेनाइजेशनल नॉलेज की आइटम्स और हमारे पास ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस की आइटम्स का क्लैश आ रहा है, वहां पे देखें सब आइटम्स का आपस में लो स्कोर मौजूद है। KL1 का PF1 के साथ 0.23 कोरिलेशन मौजूद है, जो कि बहुत कम है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी मौजूद है। इसी तरह से PF2 का KL1 के साथ 0.21 है, PF3 का KL1 के साथ 0.19 है, KL2 का PF1 के साथ 0.11 है, KL2 का PF2 के साथ 0.20 है, KL2 का PF3 के साथ 0.03 है। ये लो कोरिलेशन वैल्यूज शो कर रही हैं कि हमारे ये वाले कंस्ट्रक्ट्स का आपस में लिंक्स जो है, अगर दोनों कंस्ट्रक्ट को देखा जाए तो वो ज़्यादा नहीं है, दे आर डिफरेंट इन नेचर। KL3 की वैल्यूज को PF1 के साथ देखें 0.03, KL3 विद PF2 -0.11, KL3 विद PF3 0.017। तो ये सारी वैल्यूज जो है इंडिकेट कर रही हैं कि हमारे इस स्केल के अंदर जो है, जो सब स्केल्स हैं उनके अंदर डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी भी स्ट्रॉन्ग पाई जा रही है और कन्वर्जेंट वैलिडिटी भी एग्जिस्ट कर रही है। नाउ स्टैटिस्टिक्स यूज्ड टू मेजर वैलिडिटी। कौन कौन सी स्टैटिस्टिक्स हैं जिनको आप वैलिडिटी को मेजर यूज करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? फेस वैलिडिटी, डज द टेस्ट लुक एज इफ इट मेजर्स द राइट थिंग। इसमें सिर्फ आपने ज़ाहरी तौर पे आइटम्स को देखना होता है, तो इस वजह से इसको हम किसी भी स्टैटिस्टिकल मेजर से हम यूज फर्दर एक्सप्लोर नहीं करते हैं। नो रियल स्टैटिस्टिकल टेस्ट इज देयर टू मेजर दिस वन। फिर है हमारे पास कंटेंट वैलिडिटी। फेस वैलिडिटी को मेजर करने के लिए बेसिकली जो हमारे पास एक्सपर्ट्स होते हैं उनका नॉलेज यूज होता है, स्टैटिस्टिकल मेजर्स यूज नहीं होती। नेक्स्ट है कंटेंट वैलिडिटी। डज द टेस्ट इंक्लूड द राइट सॉर्ट ऑफ कंटेंट। क्या इस टेस्ट के अंदर जो है कंटेंट की सही फॉर्म मौजूद है, जिस तरह का होना चाहिए वैसा ही है। स्पेशली इंपॉर्टेंट फॉर नॉलेज टेस्ट। ऐसे टेस्ट के अंदर इस चीज़ को हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, कंटेंट को एनालाइज करते हैं जहाँ पे नॉलेज को असेस किया जाना हो। सेम फॉर दिस, नो रियल स्टैटिस्टिकल टेस्ट एग्जिस्ट। इसमें भी एक्सपर्ट्स ओपिनियन, एक्सपर्ट्स का एक्सपीरियंस, उनका नॉलेज जो है वो हमारे पास यूज होता है। उनके ओपिनियन की बेस पे हम डिसाइड करते हैं whether this scale has content validity or not. Next is construct validity. Does the test measure the theoretical underlying construct that it is supposed to? क्या ये हमारे पास जो हम theoretical underlying construct है उसको मेजर कर रहे हैं, क्या वाकई ये इसको मेजर कर रहा है? इसमें सिंपलेस्ट जो हमारे पास स्टैट्स है वो है give a group this test plus one or more other tests that measures the same thing and correlate। यानी कि हम इसको कोरिलेशन मेथड के थ्रू मेजर कर सकते हैं, जो सिंपलेस्ट फॉर्म है। मोर कॉम्प्लेक्स स्टैट्स यूज फैक्टर एनालिसिस टू चेक दैट द फैक्टर स्ट्रक्चर फिट्स योर थ्योरेटिकल मॉडल। अगर थोड़ा कॉम्प्लेक्स करना चाह रहे हैं तो फैक्टर एनालिसिस कर लें। मोर कॉम्प्लेक्स स्टिल, मजीद अगर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस करना चाह रहे हैं, बहुत ज़्यादा इन डेप्थ जाना चाह रहे हैं, यूज टेक्निक्स लाइक CFA, कंफर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस। फैक्टर एनालिसिस की सब टाइप्स जो हैं आप उनमें जाना शुरू कर दें, मजीद कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी को आप एक्सप्लोर अगर करना चाह रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास टाइप है क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी। इसको हम किस तरह से मेजर कर सकते हैं? डज द टेस्ट रिलेट टू एक्सटर्नल क्राइटेरिया इन द वे दैट यू वुड एक्सपेक्ट। जो एक्सटर्नल क्राइटेरिया है कि आपने उसके अकॉर्डिंग इसको मेजर, ये टेस्ट उस चीज़ को रिलेट कर रहा है, उसे मेजर करेगा। यूजुअली यूजेस कोरिलेशन बिटवीन टेस्ट स्कोर्स एंड द एक्सटर्नल मेजर। जो हमारे पास टेस्ट होता है उसके स्कोर्स को और एक्सटर्नल मेजर को कंपेयर करके, कोरिलेट करके हम इसमें से एनालाइज कर लेते हैं। कैन बी कॉन्करेंट, ऑल मेजर्स हैपन एट द सेम टाइम और प्रेडिक्टिव, मोर डिफिकल्ट बट अ क्लोज मिरर ऑफ हाउ टेस्ट आर टिपिकली यूज। इसमें हम
कॉन्करेंट वैलिडिटी के लिए भी सेम मेथड को यूज कर सकते हैं, प्रिडिक्टिव के लिए भी, लेकिन कॉन्करेंट जो है थोड़ा सा जल्दी होने वाला काम है एज कंपेयर टू द प्रिडिक्टिव। उसके बाद हमारे पास है टू असेस कन्वर्जेंट एंड डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस कैन बी डन। इसको हम कोरिलेशन के थ्रू भी कर सकते हैं, और अगर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस चाह रहे हैं तो एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस इनको मजीद इन डिटेल बता देगा। नंबर 6 पे हमारे पास है टू असेस प्रिडिक्टिव वैलिडिटी रिग्रेशन एनालिसिस कैन बी डन। एनालिसिस जो रिग्रेशन है उसका पर्पस ही प्रिडिक्ट करना होता है, तो इस वजह से हम प्रिडिक्टिव वैलिडिटी को असेस करने के लिए रिग्रेशन एनालिसिस को यूज कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी how we can conclude different criterion related measures with the help of correlation analysis. Let's watch the video for correlation analysis. In this video, I'll be telling you how you can statistically test the validity of a questionnaire for your data in less than 10 minutes. In this process, we will be using Pearson correlation coefficient to test the validity. Before going further, kindly press the bell icon and subscribe button to receive timely updates on new videos from Easy Stats. In my earlier video, I told you how you can transfer the data from a questionnaire to this SPSS file. Now, after transferring the data from a questionnaire to this SPSS file, we'll try to see how we can check the validity of all these questions. Now, in this there are 10 sample questions. If you have a questionnaire with 10 questions or even more questions, you can fill in this data sheet, and after filling in this data sheet, go to Analyze, Transform, Compute Variable, and if something is there, press Reset button. I'll say total numeric values Q1 plus Q2 plus Q3 Q4. Like this we will try to add and make a composite column of all the items. Now in this way we'll have one more column with the name total. Now press OK. When you press OK, you will get all the data in this total column. Now in this data sheet I have taken a sample of 40 respondents. It doesn't make any difference if you have more than 40. So just for the convenience I am taking 40 sample size. Now we will be using a Pearson correlation coefficient table, critical value table. It looks like this, where you have degree of freedom on the left hand side in this column, and horizontally you will find two-tailed test for 0.5%, 0.20, 0.1 and 0.05. This is 95% confidence interval. So in majority of researches you will find they quote 95% confidence interval. So this is the 0.05 level. We'll try to see the value at this level and the degree of freedom here. Now let's go back to our SPSS file. This is the file. We have here a total column. Now go to Analyze, Correlate, Bivariate. We'll reset. We have to include all the items of the questionnaire, total also. Go to Options, just leave it like this. Click Pearson and two-tailed and flag significant correlations. If you don't click this, they will not tell you the significant level. Now by clicking flag, you will have two levels at 0.02 and 0.05. So we will click this, click OK, and you will have the output. Now in the output you will find this correlation table, which shows the correlation between all the items of the questionnaire. Now this is the total. The Pearson correlation at the top, two-tailed, and n is the sample size. Here in the Pearson correlation you will find the same values are repeated.
they are horizontally and vertically, they are same. Now for Q2, this value and this value is same. So when you present data in your paper, you can delete this half portion of the correlation and you can quote only the lower half one diagonally. Now in this we have Pearson correlation 0.42 and it is significant. Now we will see the total level. If it is more than 0.05, we will say it is insignificant. So when we start, we will see what is the sample size. There should not be any missing values. So it is 40. Okay, good. Significant level. It is significant. Okay, Q2, Q3, Q4, Q5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, all are significant. That is good. Then we will see the Pearson correlation. This is the value which we have obtained. Now we will compare this obtained value of Pearson correlation with the value, critical value mentioned here in the table. Now how we will do that? Just try to see this. We have sample size n, degree of freedom n minus 2. Obtained value should be more than critical value in the table. So when we talk about degree of freedom, what is the degree of freedom for our data? We have a sample size of 40, so n is 40, minus 2, so we have a degree of freedom 38. We will go to the table, the critical value table. Degree of freedom, we will try to check at 38, and what level we want to check? 0.05. It is here 0.05 and 38. This one. So 0.05, no, 0.05 is here. 0.05, 1, 2, 3, 4, fourth row, and it's here. 3.3120. So what we will do, we will try to compare this 0.3120 with the obtained value in the output. The value is 0.613, so it is greater. So this value is greater than the critical value in the table. So I have given one example. For degree of freedom, the critical value is 0.312. It's mentioned here. See? Okay. Now check all the items of the questionnaire one by one. For Q1, obtained value is 0.613. Let's go back again, 0.613. And the critical value is 0.312. So this is greater. So if it is greater than the critical value, we will say, and it is significant, we will say this item of the questionnaire is valid. Similarly, we will try to check for Q2 also. Is this value greater than the critical value? The critical value is 0.312. Again, we will check 0.312. Yes, it is greater. It is also greater. Like this, we will check if it is greater for all the items of the questionnaire. So this is a simple process, very simple process to check the validity of our questionnaire, very fast, easily. If you have any questions, any queries, you can comment below. Now let's watch a video regarding the validity analysis using SPSS with overall analysis. Hi everyone, in this video we will learn reliability and validity of the data, how we have to check. And reliability and validity, because that is for the questionnaire, whether is our questionnaire is reliable or valid and valid. So let me start. I have already taken 100 respondents data. You can see here, this is my SPSS file. And already in the variable view, you can see I had already defined, because I had collected on the Likert scale.
Now, what we have to do with this data, first we will learn how we have to check the reliability. Let's say I will go there. Here is analyze, then scale, then reliability analysis. So I will transfer all the variables, I mean all the items to towards the right hand side rather than total. So what we have to check Cronbach alpha, right? So we will click here, okay, scale if item deleted, right? Items also, and rest is fine, right? Cronbach alpha, continue, then we have to press OK. So now you can see for my questionnaire, Cronbach alpha is 0.907 and it is very good. Number of items are 20. And Cronbach alpha is 0.907. So it is very good. If it is zero point 0.6, then it's okay. And it's above zero point 0.8. So then it is good. And zero point 0.9 is very good. It should be closer to 1. So here is you can see standard deviation also and Cronbach alpha if item deleted. You can see you can delete one item, right? And then after that again you can cross check your Cronbach alpha. And if Cronbach alpha is improved, so you can delete that item, you can drop this item. So this one is the Cronbach alpha if item deleted, right? So now you can refer this table also. This is the one thing, I mean overall Cronbach alpha we have calculated. But another thing here is item wise also we have to check, right? These are the items 1, 2, 3. So this is constructing one variable. So this is are the construct wise also we have to check our Cronbach alpha. So what I have to do if I want to check construct wise Cronbach alpha, what I have to do, I have to go there, reliability analysis, and again reset, and I will simply transfer EC1, EC2 and EC3 because they are making one construct, or we can call it one factor. These are the items of that factor. So simply I will press OK. So I can see here Cronbach alpha of this particular construct is only 0.670. It's low, right? It's on the, it should be above zero point 0.8. So then we can treat it as it is good. So let me check another one more construct I have. So reliability and reset. And now I want to check this construct GP1, GP2 and GP3. Let me check what is my Cronbach alpha. So you can see in this case, Cronbach alpha is 0.845. That's very good Cronbach alpha. So we can go ahead, right? And this is the on the base. This is the method how you have to calculate reliability. Now we can come to the validity of the data. So how we have to cross check and validity of the data. So for this purpose, what I have done, this 100 data I have taken is the total of this data of the one single respondent. For this purpose, what I did in my Excel sheet, what I have done, let me delete this row. You can see here, I will select this complete data of the all 100 respondent right here. Then I would put my cursor here, right? And auto sum. A moment I would press auto sum, then this formula is visible, and after that I would press enter, and I will drag this cell till the last cell where I required all this data. So you can see here, same data, right? This is the total. So I'm sure you understand how we had created this total call. This one is the sum of the data. So what I have to do, simply I will copy this data from this place and I will paste this data in my SPSS file, and I have already did this. Now I want to check validity of the data. So what I have to do, simply I have to go there. Validity we have to check through correlation. So bivariate correlation, right, we will reset and okay, fine. All these things we have to transfer towards the right hand side, and we want Pearson, two-tailed, and here is the flex significant correlation. Then we have to press OK.
So now you can see this is the total, right? Total is 0.45, and that is, you can see first of all what is reflecting. Yes, first row, I mean within this EC1 Pearson correlation significant at the two-tailed, and number of the data is 100, right? My sample size is 100, so it is significant, right? It is significant. And here is also for the next one item EC2 also, that is significant. It should be zero point 0.00, it should be less than 0.05, and I'm sure in my all the cases this is the 0.00, that is significant. And what we have to do, this is the one way, so we can say our questions are valid questions. And another thing, we have to cross check. I have already taken table of critical values for Pearson's R. So I have taken table value, critical values, and you can see for the two-tailed test, and this one is the 0.1, 0.05, that means 95% confidence interval, and this is 99% confidence interval, and I have taken these values, and this is the degree of freedom. So degree of freedom, let's say here is, if we will compare both these values, compare obtained result of the correlation coefficient against the critical values in the table, degree of freedom at two-tailed n minus 2, so calculated value is greater than table value, it is significant, so we can say this is a valid question. And now we can see here now 100, and in our case n minus 2, that means 98 is our degree of freedom. So let me 98, right? And or anything else we have to cross check, right? What is our, let's say 40, I mean at the 40, 42 minus 2, we can cross check. This is the validity, this one is the values. You can see here, this is the value, let's say we will talk about, right? This is the value 0.89, right? So simply what we have to do, we will cross check this value at the tabular value, critical value, so it should be, this value should be greater than that value, table value. If it is greater than, then we can say this is the, our questions are valid question. So we have learned about how we can analyze uh, validity using SPSS. Majorly, correlation method is the main source from where you can check the validity of your scale. And before checking the reliability of your scale, before checking validity of your scale, you need to check the reliability of your scale as well. The next continuation chapter is about the reliability of scale. We will see step by step the analysis how we can done it. And what about the, if you have any question about the today's lecture, you can contact on the given email address. And if you have any kind of feedback, you can also send your feedback there. Thank you for your attention. Thank you very much.